हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। एवरीवन लाइक्स टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, so why to leave the opportunity to enjoy the life? That's why I'm celebrating Christmas this time, and I will show you some DIY ideas for this Christmas. तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। The first DIY is the Christmas tree. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड अ कार्डबोर्ड ट्यूब। नेक्स्ट आपको कार्डबोर्ड ट्यूब के वन साइड पे हॉट ग्लू लगा के इसे कार्डबोर्ड पीस के ऊपर प्लेस कर देना है। और एल्स यू कैन टेक अ पॉट फिल्ड विथ सॉइल और एनी हैवी ऑब्जेक्ट टू कीप द ट्री इन इट, बट मैं यहाँ कार्डबोर्ड ही यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद आपको चाहिए कॉपर वायर। ये बहुत ईजिली कट हो जाता है, तो यू हैव टू कट स्मॉल पीसेस ऑफ कॉपर वायर एंड प्लेस इट विद द हेल्प ऑफ हॉट ग्लू all around the cardboard tube. As you go down of the tree, the size of the copper wire will increase and the structure of the tree is ready. It is looking something like this. अब नेक्स्ट इसके ऊपर मुझे ग्रीन गार्लैंड्स लगाने हैं, जिन्हें मैं हॉट ग्लू की हेल्प से इसके अराउंड स्टिक कर दे रही हूँ। इसे राउंड राउंड करते हुए वायर के ऊपर प्लेस कर दूँ। You have to cover all the copper wires with the garland. My daughter is always excited about Christmas. तो मैंने सोचा कि क्रिसमस ट्री ही घर पर बनाया जाए। And I really enjoyed the process. तो ये बन गई मेरी क्रिसमस ट्री। Now it's time to decorate the tree, and this part me and my daughter will do. ट्री थोड़ा सा delicate है, so you have to handle with care. Goes the star at the top of the tree, and we are done. Next DIY मैं बनाने जा रही हूँ snowman. For that you will need 2 balls, एक बड़े साइज का बॉल और एक छोटे साइज का, एंड अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड जिसे मैं एज अ स्टैंड यूज़ करूँगी। तो उसमें ग्लू लगा के बॉल के बॉटम पे इसे प्लेस कर दे रही हूँ। और छोटे बॉल को मैंने डबल साइडेड टेप से कुछ इस तरह से प्लेस कर दिया है, क्योंकि ये हॉट ग्लू से स्टिक नहीं हो रहा था। तो और मैंने स्टिक्स के हैंड्स भी लगा दिए हैं। Now put the glue all over the ball and spread it well. Next you have to cover the ball with the cotton. Now repeat the same process with the big ball. तो कुछ इस तरह से मैंने दोनों को कवर कर दिया है कॉटन से। नाउ इट्स टाइम टू स्टिक द आईज, जो कि मैंने पेपर से बनाए हैं और इसे पेंट कर लिया है ब्लैक। एंड ये नोज़ भी मैंने पेपर से ही बनाया है। कोन के शेप को मैंने ऑरेंज कलर में पेंट कर लिया है एंड इसे हॉट ग्लू से प्लेस कर दूंगी। नाउ टेक अ पेपर कप फॉर द हैट, कट इट हाफ, पेंट इट ब्लैक एंड इसमें ग्लू लगा के इसके ऊपर
प्लेस कर देना है। I have used red ribbon as a scarf. Now with the red scarf, my cute little snowman is ready. And my kid really loved it. Christmas is incomplete without cookies, candies and gifts. So I am making a very simple DIY here. जिसके लिए आपको चाहिए एक कंटेनर। यहाँ पे मेरे पास ग्लास की बॉटल है। इसके लीड को आपको लेना है and all you have to do is to cover the lead with the felt, which you will just see ahead. If you have red cloth, that will also work. Now the white felt at the bottom and tie it with the twine or rope. And here we go, your simple Santa bottle is ready. You can fill this with cookies or candies and place this jar beneath the tree, or you can give this to anyone. Now the last DIY is the candle stand decoration. I'm taking some old Diwali's diya और 2 मिट्टी की प्लेट्स जिन्हें मैं वाइट एक्रिलिक पेंट से पेंट करूँगी। इसी में अच्छी तरह से 2 या 3 कोट पेंट कर ले रही हूँ। Because my paint was not so opaque, so I have to apply 2-3 layers. Let it dry completely, then put the hot glue at the bottom of the diya and place the plate on the back of the diya. And the stand is ready. I love this one. And repeat the same process with the other one. Now ये artificial grass मेरे पास पहले से था जिसे मैं small pieces में कट कर ले रही हूँ. And I have to stick the red flower in between the 2 leaves. Now set the ambience with the candles. So this was my last DIY. I love all my ideas. What about you? Please let me know in the comment, and please like my video if you truly appreciate my work. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. And I'll see you in my next video. तब तक के लिए bye bye.